Morning everyone. बहुत समय हेलानी एगो सेट करियर इन टाइम पड़ेला. Yes, good morning Nikki, good morning Shravani, good morning Premos, good morning Lavakush. आज बहुत लेट ही गलानी क्लास स्टार्ट हैला बेला को ये सब सेट कला को आज बहुत डेरी तापर आज सत कहूँ आज 5टा बेले उठी सीना आज मो निद प्रॉपर्ली भांगिनी जे द्वारा मते बहुत टायर्ड लागुला टिके धीरे 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 करी बहुत टाइम लगे. Okay, so let's have a quick revision. हमारा aldehyde and ketone देखले aldehyde माने जहार RCHO रहिबा molecular formula RCO R- माने ketone aldehyde suffix हबो al prefix हबो formyl ketone रो ONE oxo further oxidation कले in presence of acidified K2CR2O7 or KMnO4 we get aldehyde or ketone from alcohol. By means of catalytic dehydrogenation also alcohol gives rise to aldehyde or ketone. Calcium formate or plus calcium acid plus calcium any compound. So dry distillation of calcium salt of fatty acid will produce aldehyde and ketone accordingly. For the Rosenbaum reduction reaction, in Rosenbaum reduction reaction we get aldehyde from acid chloride. Then dialkyl cadmium react with acid chloride to produce a ketone. Alkyne undergo hydrolysis to and in presence of HgSO4 and H2O, H2SO4 to produce aldehyde or ketone accordingly. Alkene under ozonolysis will produce ozonide which will further give rise to aldehyde or ketone. Kirknan's reagent under treatment with HCN will produce aldehyde which under treatment with alkyl nitrile will produce ketone accordingly. By means of heated reaction we get benzaldehyde from toluene by treating with chromyl chloride in presence of CCl4, benzene plus CO plus HCl in presence of AlCl3 and CuCl produces benzaldehyde. Further benzene plus any acid chloride will produce corresponding aromatic ketone. Only formaldehyde is gas, otherwise all are liquid, and from carbon 12 all are solid. Lower aldehydes are more soluble in water, whereas higher aldehydes are less soluble in water. Boiling point of alcohol is more than ketone is more than aldehyde then corresponding alkane. Further we had seen that HCN under addition with HCN it will give rise to corresponding cyanohydrine. Sodium bisulfite it will give rise to sodium bisulfite. Then upon treatment with Grignard's reagent we are getting an alcohol. Hydroxylamine will give rise to oxime. Further hydrogen will produce hydrazone, phenyl hydrogen will produce phenyl hydrazone, semicarbazide will produce semicarbazone, 2,4-DNPH will produce 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Aldol condensation, the aldehyde containing an alpha hydrogen undergo aldol condensation to produce beta hydroxyaldehyde as a product. This is the aldol condensation process. And Kishner reaction, in this reaction the aldehyde that does not contain any alpha hydrogen undergoes such type of reaction in presence of a concentrated alkali to produce alcohol and sodium salt. In the first step what was happening that the base ataxia to make a CH3 to make an intermediate, which intermediate cause transfer of hydride ion to form CH to form an carboxylic acid as well as an CH3O minus. Further, this is your
further the loss of proton will lead to SCO minus, which upon treatment with Na plus will produce corresponding sodium salt, and this will give rise to alcohol accordingly. Now comes to this part. What happens when we react with concentrated NaOH? कौन आसीबो प्रोडक्ट जेतेबेले हमें concentrated NaOH सहित ट्रीटमेंट करिबा, particularly माने 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल को 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल को concentrated NaOH सहित ट्रीटमेंट कले हमें कौन कौन प्रोडक्ट पाइबा. तुम कही गोटे जगह तुम कौन कर सी सी जमी तुम लेफ्ट साइडटा अच्छी जमी रखीदेव सी डबल बॉन्ड ओ एच जो थिला से कौन कर सी एच ये ओ गोटे साइड रख आ गोटे साइड सेम थिला सी एच थ्री फर्दर सी एच थ्री ये कौन करदेव सी ओ ओ एन ए करदेव. ओके गोटे साइड सोडियम सल्ट बाहर जीव गोटे साइड अल्कोहल बाहर ये हाइड्रोजन देदेवा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 डाइमिथाइल propanol 2 डाइमिथाइल propanol and this is your 2 डाइमिथाइल sodium propanoate, sorry sodium 2 डाइमिथाइल propanoic acid, sorry sodium salt of propanoic acid or propanoate also. Yes Gajendra pranam. Further याकू कले हमें कौन पाइबा प्रोडक्ट. Then ATSO C2H5 CCH3 C2H5 then C double bond O ONA. So this is the product in this case. Next reaction with PCl5, it will give rise to dichloroalkane. Further what is the product in this case? A case से product कौन आसीबो CH3COC2H5 that is your butane 2ONE को जेतबेला हमें PCl5 सहित ट्रीटमेंट करबा हमें कौन पाइबा प्रोडक्ट. This is your dichlorobutanol. Very dichlorobutanol nuho Sravani, dichlorobutane. So this is 2 dichlorobutane. Yes Nikki, you are right. Further ATM जो देखिबा CH3, what is the product here? The name of the product will be 2 dichloro CO को हाटी की Cl लागिब डायरेक्ट. Yes समस्त जानते dichloroethane. Very good. The name of the compound is dichloroethane. Next C2H5 CA याको कौन हम what is the product further? नेम कहवा को पड़ियो पिला माने. ये 2 डाइक्लोरो ठीक अछि 2 डाइक्लोरोइथेन.
this is your 2,2-dichloro-propane, right? This is 2,2-dichloro-propane. Is it clear? बुझी पारल समस्ते? नेक्स्ट होमवर्क सेक्शन को जीवा CH3OH ऑक्सीडेशन कले आमे गोटे कंपाउंड पाउतले फर्दर कंसंट्रेटेड NaOH देले आ गोटे कंपाउंड पाइले ऑक्सीडेशन कले आमे पाइबा HCHO कंसंट्रेटेड NaOH देले माने तार अर्थ एटा HCHO थिला ताले एटा तुमरो कैनिजर रिएक्शन देबो कैनिजर रिएक्शन हेले कोन हबो HCOH फर्दर तळे H ऊपर H लागि जीवो सो एटा CH3OH प्लस HCO एटी ONA हिजिवो सो सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथानॉल आसीजो फर्दर वेरी गुड फॉर्माल्डिहाइड आसीबो लवकुस गुड तापर एटा आसी तुमारो इथानॉल दिस इज योर इथानॉल ethanol will give rise to methanol plus sodium formate. Very good. So we will get acetaldehyde. अच्छा पिला माने क्लास कला बेले किछि ब्लर आछी कि इमेज ब्लर आछी कि दैट इज रीडेबल होनी कि से भलिया रीडेबल होनी कि ब्लर आछी कि acetaldehyde on reacting with no all clear sir अच्छा ठीक अछि no sir okay so acetaldehyde upon treating with dilute NaOH will produce the compound what is the compound एटा तुमरा आसीबो एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH अछि एठी अल्फा हाइड्रोजन अछि अल्फा हाइड्रोजन थिबारो एटा aldol condensation दबो so it will be CH3 CHOH then CH2 CHO मैं उडा प्रैक्टिस करथिली बोले डायरेक्ट कहि दे परछि तुमको भी टाइम देइतला तुमे प्रैक्टिस कर परिबो so name of the compound will be 3 hydroxy butanol नेक्स्ट 3 नंबर को आंसर कौन हबो 3 नंबर आंसर will give rise to benzaldehyde very good लवकुश 3 hydroxy butanol yes you are right तो ये हमें बेंजाल्डिहाइड पाइले बेंजाल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड NaOH सहित ट्रीटमेंट कले हमें कौन पाइबा very good lavakus you will get CH2OH benzyl alcohol plus benzyl alcohol plus this is your sodium benzoate so you will get sodium benzoate plus benzyl alcohol or benzanol plus sodium benzoate नेक्स्ट या को हमें तोले हाइड्रोजन से तो ट्रीटमेंट करिवा हमें कोन पाइबा प्रोडक्ट बेंजीन रे CH2 CHO हिजो राइट
जोटा डाइल्यूट NaOH सहित ट्रीटमेंट कले इट विल गिव राइज टू अल्डिहाइड कंडेंसेशन ताले एठी कोन आसीबो एई जो बेंजीन बदल रे हमें पीएच लिखि देबा ठीक अछि पीएच सीएच सॉरी CHOH तो पीएच CH2 CHO जोटा CHOH हे गला पुणी एठी तुमारो कोटा जीवो ना CH2 सेक्शन टा तो एठी CH पीएच ता तळको रहइबो CHO एज ए प्रोडक्ट तो ए भले आसीबो प्रोडक्ट देखि दियो प्रोडक्ट बस CH रे जो सब्स्टिट्यूशन रही दैट इज योर पीएच ठीक अछि बेले बेले मु लेखा लिखि दोछि किंतु सेटा शो ऑफ होनी मु देखि बारे so this will be pH the name of the compound will be different आमे ए कंपाउंड रो ना करबा को जबनी कारण ए कंपाउंड रो ना जति करबा या को नंबरिंग करबा को पड़िबो इठू 1 2 3 4 so 3 hydro sorry 2,4 diphenyl 3 hydroxy sorry 3 hydroxy 2,4 diphenyl butanol name of the compound will be 3 hydroxy 2,4 diphenyl butanol okay next 5 number question या को ओजोनाइट करले कोन आसीबो प्रोडक्ट we will get C further there is your C two methyl butanogenide very good Nikki so it will be CH3 further this will be CH3 this will be CH3 there will be H there will be CH3 and this will be O so this is your 2 methyl butanogenide further upon this ozonaide will produce two compounds what are they first one is CH3 COCH3 and second one is CH3 CHO so we will get also two types of dichloroalkane that is first time paiba CH3 CCl so this is your 2 dichloropropane 2 dichloropropane आगोट जारे कोन आसीबो CH3H CCl so this is 2 dichloroethane गोट आसीबो 2 dichloroethane आउट आसीबो 2 dichloropropane नमस्ते त्रिषा गुड मॉर्निंग नेक्स्ट यार ना लेखुनी पिला माने 2 डाइक्लोरो इथेन 2 डाइक्लोरो इथेन तो बनी 1 डाइक्लोरो इथेन तो एटा न लिखले भी चलिबो नेम भी न लिखले भी 1 नंबरिंग चलिबो सो इट विल बी डाइक्लोरो इथेन ता ऊपरटा किंतु 2 डाइक्लोरो प्रोपेन कहा को CrO2 Cl2 और CCl4 देले हमें गोटे कंपाउंड पाइबा which on treating with PCl5 it will give rise to such compound phenyl dichloromethane आंसर कोन हबो इठी जदि हम देखिबा
there is your benzene. Further, it will be CHO, which react with PCl5 to produce phenyl dichloromethane. Further, it ame kemti paiba, that is your toluene. This is your Itard's reaction. And this is benzaldehyde. Okay, so after this we have completed the homework section. एबे हम देखिबा हमर ऑलरेडी देखथिले PCl5 सहित रिएक्शन, तापरे बेस सहित रिएक्शन, दैट इज aldol carnitine. एभले हम देखिबा जदि हमर टोटल को जे पांचटा रिएक्शन देछि, ई पांचटा कैटेगरी जाइछि. एबे F नंबर रिएक्शन देखिबा. F number reaction होची reaction with ammonia. Reaction of formaldehyde with ammonia. Last टा Rosenmond reduction reaction हबो. No Rosenmond reduction reaction हबोनी लपकुस PCl5 रहिछि. PCl5 रहिछि. PCl5 रहिथिबारु Rosenmond reduction हबोनी. Last टा ठीक अछि. Toluene upon oxidation will produce benzaldehyde, which upon treating with PCl5 will produce dichloroalkane plus POCl3. Is it clear, Lavocus? Reaction with ammonia लिखि दवा. एटी पिला माने प्रत्येक रिएक्शन को मन रखियो पड़ियो. ठीक अछि. मन रखियार किछ असुविधा नै, मु मन रखै देबी. Just you should go in details. Okay. तो हमें लिखिबा दैट प्रथम हम देखिबा फॉर्माल्डिहाइड. यार अंडर रे एक नंबर देखिबा फॉर्माल्डिहाइड reacts with ammonia. Very important. Formaldehyde reacts with ammonia to give urotropine. Formaldehyde ammonia सहित react करिया द्वारा हमर urotropine गोटे प्रोडक्ट आसे. What is urotropine? किंदी कोन प्रोडक्ट? What is the reaction behind this? That this is your H6 molecules of HCHO plus it react with NH3, that is 4 molecules of NH3 to produce CH2 whole 6 and 4 plus 6H2O. तुम मानको चक्कर आस जीवनी जे सार एते बड़ रिएक्शन हमें मन रखिबो केमती केमिति आकु मन रखिबो सार हमर ट्रिक कोन, हाउ टू रिमेंबर द रिएक्शन. वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो आमे जेतोले यूरोट्रोपिन कर दबा, देन all the confusion will be cleared. यूरोट्रोपिन कर देला परे तापर फॉर्माल्डिहाइड 6:4 रेशियो रहइबो 6:2. तापर हम कहि देबी केमति कोन प्रिपरेशन मन रखिबा को ट्रिक. सो एठी कोन करबो ना, बेंजीन भलिया रिंग करबो. ठीक अछि. आ टिके बड़ कर दवा. ठीक अछि. तो एई जो मझिरे मझिरे गोटे गोटे डायग्राम नाइट्रोजन दे दवा. मझिरे मझिरे गोटे गोटे जगह नाइट्रोजन दे दवा. गोटे नाइट्रोजन तापरे फर्दर कार्बन माने CH2 आसीबो एज यूजुअल जेम थिला. फर्दर नाइट्रोजन पुणे अथर नाइट्रोजन तार अल्टरनेट रे पुणे CH2. बुझियला. एई भलिया बेंजीन रिंगटा प्रथमे करिनबो. तापर प्रत्येक जगह प्रत्येक नाइट्रोजन रु नाइट्रोजन जन CH2 बाहर छि, एटु भी से भलिया CH2, एटु भी से भलिया CH2 बाहरिबो, एटु भी से भलिया CH2 बाहरिबो. CH2 माने सी आरी आगु को बढ़िबो.
मझिरे पुणी नाइट्रोजन. So this is the structure of urotropin. And what is the name of the urotropin, or what is the general name? That is your hexamethyl. 6टा मिथाइल ग्रुप रही. हेक्सामिथिलिन टेट्राएमिन. हेक्सामिथिलिन टेट्राएमिन एतटा इंपोर्टेंट नहीं अवश्य यार नेम. टेट्राएमिन, हेक्सामिथिलिन टेट्राएमिन. एटा जदि इनऑर्गेनिक होता ताले ए अलगा आसंदा. As it is your organic compound, that's why AA will be combined to give tetraamine. So hexamethylene tetraamine is the IUPAC name. Hexamethylene केमदी ना तुम्हें माने गणिबो, काउंट करिवो केतरा CH2, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, 6 CH2. So CH2 whole 6 से गला. नाइट्रोजन केतरा रहिछि? नाइट्रोजन रहिछि हमरो टोटल 1 नाइट्रोजन, 2 nitrogen, 3 nitrogen, 4 nitrogen. So total 4 nitrogen is there. So CH2 whole 6 and 4 आसीगला हमरो कंपाउंड. एबे तुमे कंपाउंड मन रखिबाटा इजी हिजिबो. कंपाउंड रो फार्मूला जानि देलो, यूरोट्रोपिन रो फार्मूला. ठीक अछि. बेंजीन रो ए भलिया स्ट्रक्चर देखिकी कर दे परियो दैट इट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन. यूरोट्रोपिन को आमे केमिति रेशियो मन रखिबा दैट इट इज जदि हम देखिबा 6टा फॉर्माल्डिहाइड रही माने CH2O. एक्चुअली फॉर्माल्डिहाइड माने CH2O. तो 6टा यूनिट रही, सिंपली 6टा यूनिट रही. से 6टी जगह CH2 यूटिलाइज हो. किंतु 6टा CH2 रही माने निहाती भाव 6टा O भी रही. अच्छा 6टा O रही माने 6टा वाटर बाहर जीवो. बुझिएला. 6टा वाटर बाहरला माने 12टा वाटर. 12टा वाटर माने केतरा एमोनिया दरकार? ताले 4टा एमोनिया दरकार. 4NH3. कारण हाइड्रोजन 12टा दरकार. हाइड्रोजन 12टा माने लेफ्ट साइड रे केतरा? 4NH3 हिजबो, which will give rise to 6CH2O plus CH2 whole 6. आ एठी जो 6टा लागिथिला CH2 whole 6 तापर सेठी कोन हैला? 4टा नाइट्रोजन लागेला. सो CH2 whole 6 and 4. मने रहला समस्त रिएक्शन CH2 whole 6 and 4. This is the urotropin. तुम्हें मन रख दियो फॉर्माल्डिहाइड जेतोले एमोनिया से तो ट्रीटमेंट करिवा में यूरोट्रोपिन पाइबा. ओके. 2 नंबर जिबा. aldehyde reacts with ammonia to form aldehyde upon subsequent heat. आवश्यक हीट दबा द्वारा हमें जेकोसी आल्डिहाइड को जदि एमोनिया सहित रिएक्ट करछे हमें अल्डिमाइन पाइबा. ओके. सो R C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2H. तो ये कौन है जीव? जनरली तुम्हारा ये जो NH2 अच्छी, this NH2 will attack it here due to polarization. It will be O minus. So the product will be your R CH2 R COH, and there will be H, there will be NH2. Okay, R CHOH NH2. एटा कह जिवो aldehyde ammonia. which upon heating हीट करबा द्वारा तुमर कोन बाहर जिवो ना H आ OH बाहर की पळेबो. हाइड्रोजन आ व्हाट OH बाहर की पळेबो. हाइड्रोजन कोड एठू OH बाहर की पळेबो, एठू H गोटे बाहर की पळेबो. ठीक अछि. सो हमें कौन पाइबा प्रोडक्ट R C H एटा लिखिदेली
ए जो OH बाहरी की जीवा पर एठी गोटे डबल बॉन्ड हे जीवो डबल बॉन्ड NH सो RCH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O आउ थरे बुझे दोची जो माने भी बुझी पारि न एटे NH2 माने एठी गोटे हाइड्रोजन अछि NH बॉन्ड H एई H टा कोन हे जीवो रिलीज हे जीवो फर्दर एठी डबल बॉन्ड हे जीवो एठू OH चली जीवो तो एटा कोन हे जीवो RCNH H तो एटा को आउ टिके सजै देबा ए भलिया लिखि देबा ठीक अछि so we will get the aldehyde as product एठी हमें प्रोडक्ट पाइबा aldehyde ताले हमें जदी एसिटाल्डिहाइड नबा कोन आसीबो प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड नेले हमर प्रोडक्ट कोन आसीबो what is the product of tint what is the product of tint एठी प्रोडक्ट कोन आसीबो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया वेरी गुड शुभम CH3 COH H then NH फर्दर ताको हीट करिया द्वारा कोन पाइबा वेरी गुड श्रावणी this is your acetaldehyde ammonia which upon subsequent heat will produce CH3CH double bond NH plus water will produce acetaldehyde so this is acetaldehyde ammonia से भले आउ कोन कोन हे परिबो से भले हमर आसीबो प्रोपानल्डिहाइड ताले एटा प्रोपानल्डिमाइन ब्यूटानल्डिमाइन पेंटानल्डिमाइन ए भले आसीबो ना गुडा हेक्सानल्डिमाइन ठीक अछि so accordingly the names will be like this next 3 नंबर जिबा 3 नंबर रे acetone react with but 2 molecules of acetone जोटा गोटी मात्र कीटोन कथा कहैछि सर फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन कले हबो कि फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन कले तुम्हारो यूरोट्रोपिन दे दो फॉर्माल्डिहाइड अमोनिया दे परिबो नाही बिकॉज़ इट इज हाईली रिएक्टिव फॉर्माल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव सेति पय गुड मॉर्निंग नवीन 2 molecules of acetone react with ammonia to form an addition product known as diacetone amine what addition product by complex आसीबो which is not important but हमें केवल लिखि देथिबा सो हमर कोन आस्तिबो ना गोटे जगह रे तुमरो CH3
CO एटा हे गला एसीटोन प्लस मिसेइबो काहाकू ना CH3 CO CH2H ठीक अछि तो एटी कोन हबो एटी जो CO आउ H मिसी जिवे मिसी की प्रोडक्ट दे देबे दे विल गिव राइज टू ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली प्लस एमोनिया सब मिसी गोटे प्रोडक्ट दे देबे जद्वारा द प्रोडक्ट विल बी नमस्कार सोनू the product will be CH3 C then NH2 गोटे जगह रहिबो आ गोटे जगह रहिबो कोन देखो एटी ध्यान देकी देखो एटा होची मेन ग्रुप ठीक अछि CH3 लागिला CH3 लागिला C लागि गला तापर फर्दर गुड साइड बॉन्ड हला NH2 सहित आ गुड साइड ए बळका सहित ग्रुप सहित बॉन्ड हो दैट इज CH2 CO CH3 CH2 CO CH3 प्लस वाटर हे की रिमूव हे जिवो ओके आको आउथर भलरे लिख देछु with NH3 लिखा होइछ yes ammonia तो this is NH3 ammonia NH3 माने HNH2 ammonia को हमें भांगी देले ठीक अछि ओके नेक्स्ट हम जिबा 80 सरला तुमरो रिएक्शन विथ ammonia नेक्स्ट हम जिबा रिडक्शन सो एटा एस जिबा हमर G category this is your G category 7 number category reduction reaction okay reduction रे प्रथम हम देखिबा catalytic reduction first one is catalytic reduction catalytic reduction रे कोन हबो aldehyde or ketone सर CH2 CO CH2 शुभम बुझा पड़लानी CH2 CO CH2 कोन कहउछो CH2 CO CH3 हबो कारण गोटी हाइड्रोजन जाइछि आ गोटे हाइड्रोजन सेंति रहिछि ठीक है सो CH2 CO CH3 हबो नॉट CH2 CO CH2 हबो aldehyde and ketone get reduced with hydrogen in presence of nickel or platinum or palladium metal to produce primary and secondary alcohol respectively. प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हमें कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन बा ऑक्सीडेशन कले हमें पाउथिले एल्डिहाइड बा कीटोन किंतु एठी हमें सेमान को रिडक्शन कले हमें पुणी अल्कोहल पाई जिबा माने जोटा बैकवर्ड पाथ मन रख ऑक्सीडेशन कले हमें ये पाउथिले हमर प्रोडक्ट पाउथिले एल्डिहाइड कीटोन ता सेमान को रिडक्शन कले हमें अल्कोहल पाइबा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल
So this is your RCHO in presence of plus H2 in presence of nickel catalyst, they will produce RCH2OH. Similarly, in presence of palladium catalyst, it will give rise to RCR dash double bond OH2 थिला तो H2 रु गोटे H कार्बन रे लागि जिवो गोटे H O रे लागि जिवो केमदी मन रखिबो हाउ टू रिमेंबर दिस RCHO माने ए भलिया RC double bond OH plus H2 अछि so simply गोटे H ए पाखरे लागि जिवो O पाखरे आ गोटे H कार्बन पाखरे लागि जिवो ठीक अछि so it will be RCH2OH सेंदी गोटे कार्बन पाखरे H लागि जिवो आ गोटे H O पाखरे लागि जिवो so you will get what is the product further R C R dash CHOH so it हमें secondary alcohol प्रथम रे primary alcohol पाइले is it clear प्रथम रे प्राइमरी अल्कोहल सेकंड रे हमें सेकेंडरी अल्कोहल पाइले नेक्स्ट किछि एग्जांपल करबा CH3CHO CH3COCH3 एसीटोन फर्दर HCHO formaldehyde C2H5CHO then benzaldehyde upon catalytic reduction they will produce a compound what are the compounds पिलाना जी एतिकी होमवर्क रहो आसंदा काले हमें पूरा जहा पढ़ीचे से सब गुडा को नेकी पुनी होमवर्क दबा तो आज एतिकी रहो नेक्स्ट क्लास रे हमें बड़का सेक्शन पढ़िबा रिडक्शन रिगार्डिंग Wolff-Kishner reduction using reducing agent like LiLH4 ठीक अछि LiLH4 भी एडी हमें लिखि दे परिबा catalytic reduction और this is also catalytic reduction or reduction in by ना एडा अलगा रे लिखिबा था ये भी सेम प्रोडक्ट दबो जस्ट कैटलिस्ट चेंज हो जिवो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा तो आज पई इतिकी होमवर्क रहो वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स रिडक्शन पार्ट ता आज कर दे थंदे बट somehow I have to go that's why I concluded the class here अब बड़का सेक्शन हमें नेक्स्ट क्लास आसंदा काली पढ़िबा तुमे माने रेगुलर क्लास करो आउ किछि दिन रो कथा माने कमिंग मंडे बा ट्यूसडे दिन ए चैप्टर आई थिंक सरी जीवो इधर मंडे और ट्यूसडे कारण मु स्लो रे टिके पढौची ना सो इट मे टेक अप टू ट्यूसडे आ बहुत होमवर्क भी रहउची सो अप टू ट्यूसडे क्लास कंक्लूड हे पारे थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास थैंक यू